Hi everyone, greetings from National Skills Network. Today me and Pratyusha from NSN team, we are together once again, and this time we are here with a very hot topic that is in the news of late. So Pratyusha, what are we talking about today? Of course, the 10 Bagless Days, the initiative which is making, which is the headlines of most of the newspapers from past few weeks. And it is like most people are discussing about is many states are implementing it. So, of course, the Bagless Days initiative. Yeah, so as you must have seen the headlines, जैसे हमने अभी आपको दिखाया हेडलाइंस भी बैगलेस डेज के बारे में है आजकल न्यूज़पेपर्स में और बहुत चर्चा हो रही है। तो चलिए देखें ये बैगलेस डेज का कॉन्सेप्ट क्या है और इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सही तरह से जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बताया गया है। So Pratyusha, how was your experience when you were carrying a bag, probably a heavy one when you were in school? या जब मैं स्कूल में थी इट वाज लाइक मेनी स्टूडेंट्स स्कूल बैग्स लाइक वी हमें पूरा टाइम टेबल देख के पूरा स्कूल बैग एक हेवी स्कूल बैग तैयार करके जाना पड़ता था और मैं पर्सनली मतलब बहुत लेजी थी मुझे इतना हेवी बैग्स कैरी करना पसंद नहीं आता था तो मोस्ट ऑफ द डेज बिकॉज ऑफ द बैग्स द हेवी वेट बैग द ऑल द सब्जेक्ट्स एंड ऑल आई यूज्ड टू बी वेरी लेजी टू गो टू schools but so now when I hear about this bagless days concept, I was like, काश मुझे भी एक चांस मिल जाता कि मैं फिर से स्कूल में आ जाती and I could experience this experience of bagless days, going to the school without a bag. It's very exciting concept. I'm sure students are going to be really happy. They're going to really enjoy it a lot. या जैसे आपने सुना प्रतीशा को फिर से स्कूल में एडमिट होने का मन कर रहा है सो प्रत्युषा गुड आई एम श्योर यू वुड हैव एंजॉयड लाइक यू सेड well you know the bagless days concept that we are discussing as Pratyusha just said it is you know very interesting and exciting is also because today the education system is undergoing a change with the National Education Policy 2020. And I think there is a very serious reason behind it. And it is not just helping children come to school one day without bag. Bagless days, it's not just reducing the burden of bags for one day. That is just not the reason. There are many more reasons and more important reasons. One being a vocationalization of school education, where every school will be offering one vocational subject. प्लस द बैगलेस डेज का जो दिन है उसको आप वोकेशनल के लिए भी यूज कर सकते हो दे कैन ट्राई आउट फ्यू थिंग्स यू नो विद देयर हैव हैंड्स ऑन लर्निंग दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द गांधीयन थॉट ऑफ क्राफ्ट सेंट्रिक एजुकेशन right which is very important at the age you know that these children are so if I have to convey the importance of bagless days it is about experiential learning which can happen in a fun way so that positive feeling can be you know really utilized for doing something more meaningful which can help them learn skills theoretical या किताबी पढ़ाई के साथ साथ practical skills यानी hands on learning is equally important right Pratyusha It's absolutely not. yeah Absolutely. एंड ये जो रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट एंड फन तरीके से ये प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करेंगे ये बैगलेस डेज के थ्रू वो इनके हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में भी बहुत मददगार साबित होगा yeah होलिस्टिक डेवलपमेंट और एक और है फ्लेक्सिबल लर्निंग एंड यस रिलैक्स लर्निंग यस जैसे इफ ऑल ऑफ यू आर ट्रैकिंग द डेवलपमेंट्स इन द स्कूल एजुकेशन द चेंजेस दैट आर हैपनिंग आपने अभी सुना होगा द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो हैज टॉक्ड अबाउट द एग्जाम्स द काइंड ऑफ स्ट्रेस चिल्ड्रन गो थ्रू इन एग्जाम्स वेयर दे आर ऑलवेज अंडर प्रेशर और ये जो डर पैदा होता है बच्चों के दिमाग में एग्जाम्स को लेके शायद बैगलेस डेज से वो भी थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि उनके सोच में भी एक उनके नजरिए में भी एक फर्क आएगी इसके द्वारा when the children are enjoying the work and doing something which they like so I think that's also going to bring in a change Yeah, absolutely.
एंड ये इस बैगलेस डेज के जरिए उन्हें इस कॉन्सेप्ट के अंदर उन्हें डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के साथ साथ मेनी इंडस्ट्रीज लाइक लोकल इंडस्ट्रीज, जो भी सपोज कोई एरिया में पॉटरी ज्यादा मशहूर है, या फिर हेल्थ केयर किसी एरिया का ज्यादा स्ट्रांग है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग है, तो ये सारे स्टूडेंट्स को उन सारे इंडस्ट्रीज को विजिट करने भी मिलेगा। एंड इंडस्ट्री विजिट आजकल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल्स डेवलप करने में भी काफी मददगार साबित होगा। इनफैक्ट हमारे एरिया में स्कूल्स में अभी से ये शुरुआत कर दी गई है। हमारे एरिया में एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा, लाइक एग्रीकल्चर इज द मेन पार्ट ऑफ आवर एरिया। इकोनॉमी के बात करें तो एग्रीकल्चर के अलावा हमारे यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी है, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा है। और स्कूल्स, बहुत सारे स्कूल्स ने स्टूडेंट्स को उन सारे लाइक एग्रीकल्चर फील्ड्स में ले जाना, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में ले जाना, वो धीरे एक छोटे स्तर पे से ही पर शुरुआत कर दिया है। और स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्स भी काफी अच्छी आ रही है। लाइक वो उन्हें वो सब एक नई नई चीजें किताबों में पढ़ते थे, पर वो अभी जाके सामने से अपने आंखों से प्रैक्टिकल होते हुए देख रहे हैं। Yeah, that's, I think, a amazing example you gave from Odisha. That's where यस, Pratyusha actually belongs to. And also, if I have to just expand this and add little more, I would say I'm doing a study of various states in India based on the new scan that we do. I can see that a lot of excitement is there in many states, and the way they are implementing is also quite different. Like Pratyusha just said, local industries play a very important role and children can be exposed to the world of work. This, I think, can be the most important benefit of such a bagless day. इसके साथ साथ काफी सारे advantages है, जैसे वो जब अपने हाथों से काम करेंगे ड्यूरिंग एनी ऑफ दीज 10 बैगलेस डेज, 10 या 30 बैगलेस डेज, आप जितने भी रखना चाहते हो डिपेंडिंग ऑन योर स्कूल, उनको डिग्निटी ऑफ लेबर, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यू है इंडिया में, इसके बारे में भी दे विल बी गेटिंग टू लर्न दैट any work has a lot of dignity and respect. And as I said, काफी सारे प्रोफेशंस, जैसे लोकल, अगर रूरल एरिया है तो रूरल प्रोफेशंस क्या है, इफ दे आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू रिपेयर समथिंग, वो रिपेयर करते समय उनको ये पता चलेगा कि इसमें क्या क्या स्किल्स इन्वॉल्व है। और ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज है जो आप इन बच्चों को बैगलेस डे के दौरान आप इनको ये एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो अभी हम दोनों आपको ये एक्टिविटीज के बारे में और बताएंगे। और इसके साथ साथ प्रत्युषा, आई थिंक वी ऑल्सो हैव टू keep in mind that teachers also need to be trained. Yes, it's very important because they play the most important role in this Yeah. entire Bagless Day initiative. Training of teachers is very important. They need to understand the entire concept, what all activities are included. So ये सारी चीजें टीचर्स को पता होना बहुत जरूरी है। और मैं कहूंगी कि टीचर्स के साथ साथ अगर पेरेंट्स को भी कुछ हद तक इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, तो ये उन्हें भी एक आइडिया दे देगा कि बैगलेस डेज में बच्चे जाके स्कूल में बस मस्ती करके नहीं आ रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स लर्न करके घर वापस आ Yes. रहे हैं, जो कि उन्हें आगे चल के उनके करियर बिल्डिंग में बहुत मददगार साबित होगा। Yeah, absolutely correct. Like you just said, parents and teachers, the pillars, of the entire schooling system, and the school leadership, of course. All of them will have to think more seriously about this. Like Pratyusha just said, ये सिर्फ मस्ती करने के लिए नहीं है, लेकिन मस्ती करते करते अगर हम कुछ लाइफ स्किल्स भी सीख ले या कोई टेक्निकल स्किल सीख ले, तो दैट इज द ट्रू सेंस ऑफ बैगलेस डेज। तो अब हम आपको एक डेमो दिखाएंगे। वी विल टेक यू थ्रू अ डॉक्यूमेंट विच इज रिलीज्ड by NCERT, and it is prepared by PSSCIVE Bhopal. So in this document, we have a lot of guidelines about implementing bagless days. So we'll take you through the document now. Now let me take you through the guidelines for implementation of bagless days in school. As we discussed, the idea of bagless days is very useful for teaching the children hands-on skills, life skills, vocational trades, and many other things.
So this is the document which is released by PSSCIVE Bhopal, prepared by them. And this is, an institution which is a part of NCERT. So you can see the kind of work that has gone into this. It's a very comprehensive document which is giving you an idea about the concept of Bagless Days. And then it also tells you the objectives, like what is it for? For example, one of the objectives here is to understand how we can connect the children with the community and teach them about the interdependence, promote dignity of labor, and help students learn through observations, and also help them interact with artisans, craftsmen, people around them, industry, and so many other objectives. And the methodology here is suggested in this document, which talks about educational tours, field visits, experiments, exploration, interviewing, talking to people in the community. So all these are also given here. Now, the best part of this document is that it is so comprehensive that it also tells you about the roles and responsibilities of the principal or the school leadership, how the teachers need to be prepared for the Bagless Days implementation, how we can inform the parents about the importance of this concept, and they should not feel that Bagless Days is not a serious thing. So the entire concept is a very, very serious one. And through this document, you will be able to get an idea about how you want to implement. For example, here we get to see the kind of activities that are suggested, like visit to national monuments, museums, handicrafts exposure, best out of waste, education, sports, hygiene, health, celebration of festivals, local crafts, fashion designing, graphic designing, even small things like, best out of waste or anything that is mostly done by the hands. Along with this, there is also a proposal to introduce children to technology like robotics, or any latest technology like maybe artificial intelligence in some playful way. So now you see, if we go forward in this, you will see lot of activities. See, like for example, there are so many activities which are listed here, and you can make use of these activities and tell the children about not only the importance of these things, but help them enjoy that day when they come without bags, and they are exposed to wonderful things around them, like as we were saying, the world of work, basically what happens, how people work, what are the skills that they use, and what are the tools and techniques that they use. So everything is included here, and there are so many activities which are outdoor activities, indoor activities, visits in and around. So depending on your location, whether it's a urban or a rural place, or what kind of a surrounding your school is located in, you can decide about these activities. So the link to this document we are going to provide in the description. Please go through this document, download, and you can refer to it for implementing your ideas for Bagless Days in your school. Thank you so much for watching, and do subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you don't miss any update from us. Thank you.